What's up everyone? Welcome to Roy the Explorer. This is अनिर्बन और आज हम जाने वाले हैं एक हिस्टोरिकल प्लेस पे जहाँ पे मैं पूरी फैमिली के साथ आज ट्रैवल करने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ वो हिस्टोरिकल प्लेस कौन सा है। तो अगर आप नए हो, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट दैट रेड कलर सब्सक्राइब बटन एंड हिट दैट बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीक एक गिव अवे आने वाला है, तो अगर आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो बने रहिए मेरे चैनल पे। और अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मिलते हैं रास्ते में। If you're not yet following me in Instagram, then do follow me in Instagram. My Instagram handle is Roy the Explorer. You can follow me there. Ask me direct questions. I always answer. So guys, finally we reached to Lepakshi. Lepakshi temple आगे है। अभी गाड़ी पार्क कर दिया हमने यहाँ पे, और गाड़ी पार्क करने के बाद अभी लिपाक्षी टेम्पल चलते हैं और लिपाक्षी टेम्पल थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं एंड आप लोगों को दिखाते हैं कैसा है लिपाक्षी टेम्पल। शायद ड्रोन आज नहीं उड़ा पाऊँगा लिपाक्षी टेम्पल के पास, क्योंकि परमिशन नहीं मिला है। बट लिपाक्षी टेम्पल में ड्रोन नहीं उड़ा सकते तो क्या हुआ, कहीं और तो उड़ाएंगे पक्का। ये प्रॉमिस है यार रॉय द एक्सप्लोरर का, ड्रोन के बिना व्लॉग नहीं बन सकता। Hello guys, right now I am at Lepakshi temple. On my left hand side there is the main temple. We can't shoot there because they said that you can't shoot inside the main temple, so we are not shooting inside the main temple. However, I am going to show you some very beautiful B-roll shots of the entrance of the Lepakshi temple. So, are you ready for it? Let's roll it. This temple, named as Virupaksha temple, it's in Anantapur district of Andhra Pradesh. It's 140 kilometers from Bangalore and it has its own history. It has been made in between 15,030 or 15,040 as per Wikipedia. The structure of this temple is unique. That's the reason all the tourists want to visit this temple. You can see the sculptures. It's very interesting sculptures. If you are a photographer, you will be confused that which shot you will take or which shot you will leave. So you need to spend a good amount of time, good amount of research, then you will get the best shot here. And all of my doubts, I can feel them fading away. Oh, you're like a fantasy. I know this can't be real. So guys, you can see those pillars are hanging. अभी पापा और अनन्या ने वहाँ पे कपड़े डाला था और वो कपड़ा एक साइड से दूसरे साइड निकाल लिया. So basically those pillars are hanging. So that is the unique thing of Lepakshi temple. One of the unique things. It's amazing. I'm falling way down, all delusional. Got the feeling like I'm lucid dreaming, got me flying high. 'Cause I can't believe that I get to have you close on an endless road I'm levitating. इंडिया में फ़ोटो खींचना कितना मुश्किल बात है. If you watch Peter McKinnon's bucket shot, then you know Peter was waiting for 2 days to take one shot. If you want to take a clean shot of this place, can you just comment me and let me know that how many days you have to wait for this shot? Because I was waiting for almost like 30-40 minutes, but I was not getting the clear space. So what I did is I did a camera trick. So people were not moving, so I have to do a trick and I get a clear shot of that place. This temple has been made during the Vijayanagaram dynasty and it has 3 parts. One is called as Mukha Mantapa, the other one is Natya Mantapa, and the third one is Ranga Mantapa. So 2 of them has been constructed completely, but the last one is not completed, so it's incomplete.
अभी अभी जो आपने देखा, जो पैर का जो मार्क था, दैट इज़ एज पर द प्रेस्ट ऑफ लिपाक्षी। 2000 लाइक हनुमान जी का पैर का मार्क है। बहुत धूप है, यू कैन सी लिपाक्षी टेम्पल इज़ देयर। उसके जस्ट राइट साइड पे था वो पग मार्क। मेन टेम्पल मेरे लेफ्ट में है, जो मैंने बी रोल में दिखाया था। So guys, finally temple visit हो चुका है and now we are heading towards Bangalore. But Bangalore जाने से पहले थोड़ा खाना वाना खाएंगे and और भी थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग करने का कोशिश करते हैं। लिपाक्षी में ड्रोन नहीं उड़ा पाए, तभी देखते हैं कहाँ ड्रोन उड़ा सकते हैं। Now we are going to see the world's biggest Nandi, which is 20 feet in height, 30 feet in length, and it's made of a single granite rock. It's a world's biggest Nandi. My head is dizzy like the purple haze. I don't know where we're going, but the clues that you are throwing are leading me back home to you. 'Cause you got the feeling like I'm lucid dreaming, got the flying, yeah. 'Cause I can't believe that I get to have you close on an endless road of levitating. So we stopped here for a tea break and थोड़ा हल्का हल्का सा नींद आ रहा था। सब लोग थोड़ा सा सो रहे थे। ये देखो अनन्या भी ऐसी है। पापा थोड़ा चाय वाय पीने गए थे और तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और उसके बाद यहाँ से चलेंगे। सो अभी मैं घर वापस आ गया हूँ और अभी थोड़ा रेस्ट लेते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते हो तो यहाँ पे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, 2-3 दिन में। वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी होगा, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।